Good evening everyone. Welcome to our webinar on hemophilia on World Hemophilia Day at Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for People with Physical Disability under Ministry of Social Justice and Empowerment by Physiotherapy Department and Assessment Clinic. Understanding and managing a lifelong condition, a well-known yet lack of awareness around the disease which affect millions globally. Hemophilia, often referred to as royal disease due to its prevalence in European society. The lesser known involvement in hemophilia is seen in eyes and ball and bladder. This webinar aims to shed on complexity of genetic disorder, its cause, symptoms, treatment, and offer insight to students for better understanding of patient problems and improving quality of life and referral at the right time. Moreover, the Right of Person with Disability Act 2016 has recognized person with blood disorders as PWD under the Act because it affects mobility and increases the risk of bleeding episodes. This year, WHO theme for hemophilia is Equitable Access for All, recognizing all bleeding disorders. Together, let's deepen our understanding of hemophilia, pave the way for greater support and advocacy. Join us as we embark on this enlightening journey with our two guest speakers, Dr. Vijay, General Physician, sharing his valuable knowledge about early identification of disease, Mr. R.N. Meena, Lecturer Physiotherapy, talking about physiotherapeutic matters, Mrs. Rajni Kalra, Assistant Professor, giving vote of thanks. मैं डॉक्टर विजय कुमार, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में 8 वर्षों से काम कर रहा हूं एज ए कंसल्टेंट। आज हीमोफीलिया डे है, इसके बारे में आप लोग को कुछ बताना चाह रहे हैं। हीमोफीलिया एक डिजीज होता है जिसमें हमारे शरीर के अंदर खून जमने की क्षमता कम हो जाती है। ये क्यों कहो कि खून जम नहीं पाता है। और आपको पता होनी चाहिए, जब कहीं कट या कोई इंजरी या कुछ भी हुआ जिससे ब्लीड हो रहा है, तो उसको रुकने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, जिससे वो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद खून अपने आप जम जाता है और हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, बाहर ब्लड नहीं निकलता है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब ये हीमोफीलिया डिजीज, इसके बारे में हम कुछ बताना इसलिए चाह रहे हैं कि खून क्यों नहीं जम पाता है। इसमें हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे खून जमने के लिए फैक्टर्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट, आप जानते होंगे प्लेटलेट होते हैं, और इसके अलावा फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर जैसे 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये सब फैक्टर जो हेल्प करता है कि खून में फाइब्रिन बने और जिससे प्लग बने और हमारे ब्लड जो बाहर की तरफ निकल रहा है उस जाल सा बन जाता है, जिसमें कि वो खून फंस जाते हैं और बाहर की तरफ ब्लीड नहीं हो पाता, जिसको रिपेयर, एक तरह से आप समझिए कि रिपेयर होता है। ये फैक्टर हमारे जीन में म्यूटेशन होने के चलते ये फैक्टर की कमी हो जाती है, यूं को, और डिफिशिएंसी भी हो जाती है। जिसमें डिफिशिएंसी जब हो जाती है तो क्या होगा कि ये चीज प्रोसेस नहीं होगा और ब्लड नहीं जमेगा, जिस चलते थोड़ा सा भी कोई मेजर इंजरी या कोई सर्जरी हुआ या कोई कट लग गया तो ब्लीड जब होना शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि क्लॉट नहीं हो रहा है, और जो कि ब्लड हमारे शरीर से धीरे धीरे निकलना शुरू होगा, बंद नहीं होगा, तो फिर हमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये बीमारी जो है एक जो पेरेंट्स से उसके बच्चे में भी जा सकता है, और इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। ये डिजीज जो है जीन म्यूटेशन के चलते होता है, जो कि रेसेसिव होता है, जिसको कहते हैं कि एक्स लिंकेड रेसेसिव डिजीज कहते हैं। ये डिजीज एक्स लिंक, अभी बताया आपको कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है, तो और इससे पहले भी बताया कि मेल जो क्रोमोसोम होते हैं XY होते हैं और फीमेल XX होते हैं। रेसेसिव का मतलब होगा कि डोमिनेंसी तब होगा जबकि दोनों जीन इफेक्टेड हो गए।
तो फीमेल जनरली कैरियर हो जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन म्यूटेट रहते हैं तो ये कैरियर होते हैं, लेकिन मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम रहता है जो कि उस पर इफेक्ट होता है तो वो सफरर हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि यदि फादर डिजीज है, फादर्स को हीमोफीलिया डिजीज का मतलब हीमोफीलिया डिजीज है, इसका मतलब उसका एक्स पे जीन म्यूटेड है और क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है और वो डिजीज पर्सन है। तो और फीमेल नॉर्मल है, तो इससे जो बच्चे होंगे तो फीमेल ना मेल सफर होंगे ना फीमेल, क्योंकि जितने भी जो आपको पता होगा कि वाई क्रोमोसोम फादर से ही आते हैं, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, मेल फीमेल नॉर्मल है और मेल सफरर है। तो जो एक्स क्रोमोसोम जो डिजीज वाले आएंगे और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेंगे जो कि कैरियर फीमेल होगा, और मेल जो होते हैं ये नॉर्मल होंगे। तो जितने भी इससे बच्चे होंगे सारे नॉर्मल होंगे लेकिन फीमेल कैरियर होंगे। यदि आप मदर कैरियर होते हैं और फादर नॉर्मल होते हैं तो इसमें 50% चांस होता है मेल का सफरर होने और 50% नॉर्मल होने का चांस रहता है। ठीक, और इसके आगे हम डिजीज के बारे में बताते हैं कि डिजीज कितनी तरह के होते हैं। डिजीज जो ये बेसिकली हीमोफीलिया को चार टाइप्स होते हैं: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया पारा हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया का टाइप जो है ये इस आधार पर आपको पहले भी बताया कि फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। उस फैक्टर में जो जो चीज़ की डिफिशियंसी या रिड्यूसिंग एक्टिविटी होता है जिस चलते ये डिजीज होता है। तो हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर 8 की कमी से होता है। हीमोफीलिया बी जो है फैक्टर 9 की कमी से होता है। हीमोफीलिया सी जो है फैक्टर 11 की कमी से होता है। और पारा हीमोफीलिया फैक्टर 5 की कमी से होता है। अब ये कमी जो होता है, जैसे जीन पे जो नंबर्स जो होते हैं उसमें कंप्लीट म्यूटेशन हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो फैक्टर 8 बनने की जो कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, जिस चलते ये फैक्टर नहीं होता है पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है। अब मैं आपको कई सारे हीमोफीलिया टाइप बताए, उसमें हीमोफीलिया ए है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की कमी से होता है। ये फैक्टर 8 जो हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है या ये फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है। और हीमोफीलिया ए जो ये डिजीज होता है में सीवियरिटी भी होती है। सीवियरिटी के आधार पर भी इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। एक होता है माइल्ड, जिसमें कि जल्दी पता नहीं चलता है, कभी चोट लग गया या कट लग गया और ब्लीड नहीं रुक पा रहा है तो उस समय पता चलता है। हीमोफीलिया जो ए है। और मॉडरेट में होता है जो कि स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो रहा है या क्लॉटिंग डिले, ब्लीडिंग जो है उसका क्लॉटिंग डिले हो रहा है तब पता चलता है। लेकिन जो सीवियरिटी होती है जिसमें कि ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है, जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाता है, कहीं भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, गम ब्लीडिंग हो गया, नेजल ब्लीडिंग हो गया, ये और ये ब्लीड जो होता रहता है ये फिर रुकता नहीं है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये सीवियरिटी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है जो कि एक मॉडरेट जो है 5 to 6 ईयर में पता चलता है कि ये मॉडरेट है। उस समय जब इस तरह का ब्लीड होता है, नेजल ब्लीड या कोई ब्लीड होता है और ये खून नहीं जम पाता है, तो फिर हम उस समय डायग्नोज कर पाते हैं कि ये मॉडरेट ये में है। इसके सीवियरिटी जो होती है ये 1 to 2 ईयर्स में ही पता चल जाता है कि जॉइंट ब्लीड और ये एक्सेसिव ब्लीड जहां हो रहा है वो उससे ये सीवियरिटी पता चल जाता है। और इसके आगे हम ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए। तो अभी हम इसके बाद टाइप बी हीमोफीलिया के बारे में कुछ बताएंगे। अब हम आपको हीमोफीलिया बी के बारे में बताते हैं। ये भी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी या एक्टिविटी कम के चलते ये हीमोफीलिया बी होता है। इसका भी सेम जो साइन और सिम्टम सेम होता है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लीडिंग होते रहता है। अभी आपको मैंने हीमोफीलिया डिजीज के बारे में बहुत सारे बात बताएं। अब इस बीमारी का पता कैसे चलता है और क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, आप
पेशेंट को उसके बारे में बताना चाहते हैं। इस बीमारी के चलते आपको बताया कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती, डिफिशियंसी हो जाती है, जिस चलते ब्लड नहीं जम पाता है। और जब ब्लड नहीं जमेगा तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी माइनर इंजरी होगा जिस चलते काफी ब्लीड होगी, वो रुकेगा नहीं। जॉइंट में अनएक्सपेक्टेड ब्लीड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और ब्लीड हो जाता है, जिसका कि कोई कारण नहीं पता रहता, लेकिन ब्लीड हो जाता है, जो जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग भी रहता है। इसके अलावा नेजल ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली होता है, नाक से ब्लड बार बार आ रहा है, ये फ्रीक्वेंटली होता है। इसके अलावा आपको जो यूरिन में कभी कभी ब्लड आ जाता है, फ्रीक्वेंटली ये देखा जाता है। तो ये सारी चीज होता है कि जब आप स्पॉन्टेनियस ब्लीड आपकी बॉडी होता है तो आपको इसका पता लगाना चाहिए। और जब हम लोग इसके जांच में जाते हैं तो ये डिजीज पता चलता है। तो इसलिए जब इस तरह का सिम्टम यदि आ रहे हो तो आप जल्द से जल्द आप किसी हॉस्पिटल जाके या किसी डॉक्टर से आप दिखा के इसका जांच कराएं, ताकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उसकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है। अब हम हीमोफीलिया के बारे में इतना बताया आपको, डिजीज क्या है, कैसे फैलता है, और उससे पहले हमें कुछ ब्लड टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करा लेते हैं कन्फर्म होने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीबीसी कराएंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे, एपीटीटी टेस्ट कराएंगे, फाइब्रिनोजेन टेस्ट कराएंगे। ये सारे टेस्ट करा के हमें डायग्नोसिस इसका पता चलेगा। फिर होता है कि किस तरह का हीमोफीलिया, आपको बताए थे, टाइप भी बताए थे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। तो इसके लिए हम लोग को जो फैक्टर होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 8, 9, 11, ये सारे टेस्ट वो कराएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरह का हीमोफीलिया है। फिर अब जब फैमिली हिस्ट्री होता है तो इसके लिए हम लोग जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें जेनेटिक टेस्ट में उससे पता चलता है कि ये कैरियर है या डिजीज नॉर्मल है, ये पता चलता है। यदि फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक टेस्ट कराते हैं। कभी कभी ये सस्पेक्टेड होता है तो हम लोग पेरेंटल टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें कि जब प्रेगनेंसी होता है प्री नेटल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि प्रेगनेंसी समय में 10 वीक्स में हम उसका सैंपल लेके जो प्रेगनेंसी है उससे सैंपल लेके उसका टेस्ट करते हैं, और उससे भी पता करते हैं कि इस तरह का डिजीज का म्यूटेशन जीन है या नहीं है। तो ये सारी चीज पता करने के बाद फर्दर हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अभी आपको मैंने हीमोफीलिया डिजीज के बारे में बताया, इसमें बताया ये डिजीज क्या है और ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसका क्या चीज की कमी होती है जो ये डिजीज होता है, इस डिजीज का इन्वेस्टिगेशन जांच से कैसे पता चलता है ये डिजीज है, और ये डिजीज कितना सीवियर होता है, सीवियरिटी के बारे में बताया था। जब ये डिजीज हो जाता है, यदि डायग्नोज हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये डिजीज क्योरेबल नहीं होता है, ये जो है ठीक पूरी तरह से नहीं होता है। इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सबसे पहले होता है कि जब ये डिजीज पता चल गया, और आपको ये भी बताए थे कि जब कोई ब्लीड होना शुरू हो जाता है तो लगातार वो क्लॉट नहीं होने के चलते लगातार ब्लीड होता है, तो हम सबसे पहले उसको प्रेशर देके रखते हैं कि ताकि ब्लीड रुका रहे, क्योंकि ब्लीड ज्यादा हो जाएगा तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग होगा। इसके अलावा आइस पैक करते हैं। आइस पैक इसलिए करते हैं कि वहां के बेस को कंस्ट्रिक्शन हो ताकि थोड़ा सा ब्लीड रुके। दूसरी बात, नेजल ब्लीडिंग का भी कॉमन बताया कि फ्रिक्वेंटली नेजल ब्लीड होता है, तो उस समय हम नेजल पे प्रेशर देंगे और आगे की तरफ झुक के रखने के लिए बोलेंगे, और इसमें हम लोग उसका टाइम बताया जाता है कि 2 मिनट आप करके देखें, फिर भी ब्लीड हो रहा है तो फिर उसको प्रेशर को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लीड नहीं रुकेगा तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यदि ब्लीड नहीं रुक रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इसमें अब ये जो और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में ये भी होगा कि आपको बताया था कि मैंने जॉइंट पे स्पॉन्टेनियस ब्लीड होता है, स्वेलिंग हो जाता है, काफी पेनफुल होता है, तो आप इसको इम्यूलाइज करें कि ज्यादा मूव न करें, क्योंकि आप मूव करेंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ेगा और सूजन बढ़ेगा, जो कि आप और सीवियरिटी की ओर जाएंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन में आप जितने अभी बोले ये सारे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हैं। इसके बाद इसका जो होता है, जब ब्लीड होने लगता है तो आपकी कमी हो जाएगी, तो उसमें ये होता है कि आप
रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी में कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, फ्री फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं या प्लेटलेट, ये सब चीज़ का जो कि हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू नीड जो डॉक्टर है ये आपको ब्लड में रिप्लेस करेंगे। तीसरा होता है कि जो जीन थेरेपी होता है, इसका जीन थेरेपी जेनोटाइपिक थेरेपी होता है जो कि स्टिमुलेट करता है कि फैक्टर आपका क्लॉटिंग फैक्टर स्टिमुलेट हो और आप खून जानने की क्षमता बढ़े। तीसरा होता है डेस्मोप्रेसिन दवा है, ये भी इसका भी काम है कि फैक्टर को एक्टिवेट करता है और आपको क्लॉटिंग में हेल्प करें। इसके अलावा और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बताएं कि ये डिजीज़ जो है क्योर नहीं होता है, तो पेशेंट को आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। उसको बताना होगा कि आप इस डिजीज़ के बारे में सारे एक्सप्लेन करेंगे और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ मैक्सिमम जी सकते हो। उसको ये एश्योर कराना भी ज़रूरी होता है इस डिजीज में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अच्छे जी सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब इतने सारे ये डिजीज पता चलने के बाद लाइफ एक्सपेक्ट जो था बहुत कम था, 10 से 11 साल था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन या और मेडिकल एडवांस होते गया, लाइफ जो है हीमोफिलिक का बढ़ते गया और अभी के टाइम में जो जनरल लाइफ है उससे 10-12 ईयर्स कम लाइफ रहता है, लेकिन इतने दिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा से जी लेते हैं। तो काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये डिजीज़ के बारे में इतना ये सारे ट्रीटमेंट जो है आपको जो प्रिवेंशन है आप घर पे कर सकते हैं, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी या अदर थेरेपी जो है आप हॉस्पिटल जाके आप ट्रीट करा सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से आप संपर्क करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि फिर मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि किसी भी डिजीज को आप जितना सीवियर होने देंगे तो ट्रीटमेंट करना उतना मुश्किल होता। मैंने आपको अभी हीमोफीलिया डिजीज के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, सीवियरिटी के बारे में बताए, ट्रीटमेंट के बारे में बताए, अदर चीज बताए और इसलिए आज ये चीज़ आप लोग को बता रहे हैं कि हमारे समाज में कहीं न कहीं इस तरह के डिजीज होते हैं जो कि पता नहीं रहता। तो ये अवेयर करने के लिए आप लोग को ये इसके डिजीज के बारे में बताएं ताकि आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, इन्वेस्टिगेशन कराएं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि जो पेशेंट है उसका बेटर लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट होता, अभी भी बताया कि लाइफ जो क्वालिटी लाइफ बेटर किया जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से। थैंक यू। Now we would like to call Mr. R.L. Meena, lecturer physiotherapy, to talk about physiotherapeutic management of hemophilia. Hemophilia is a blood disorder in which there is absent of factor 8 or factor 9 in the blood. These two factors, factor 8 or and factor 9 in the blood, are essential for formation of clot immediately after injury or trauma. Unfortunately, because these two factors are absent in hemophilia, either 8 or 9, there is delay in formation of clot, and the clot formation may increase to 8 seconds or more than 8 seconds. This leads to continuous bleeding, and sometimes this can be a threat to the life and sometimes death. There are three types of internal bleeding: intracranial, intramuscular, and intraarticular bleed. Intracranial is there is a bleed in the cranium or in the brain. There are tiny blood vessels in the brain or in the cranium, and these tiny blood vessels supply blood to the neural structures of neurons. These neural structures control the balance, coordination, posture, and movements of the body. These also control the higher functions like speech, hearing, and vision. Unfortunately, in hemophilia, because of injury or trauma, the bleed does not stop or it takes more time.
So there is delay in formation of clot, or the blood comes out of the blood vessels. This leads to loss of blood supply to the essential structures like neurons and neural structures. So loss of blood supply leads to hypoxia. The second reason, because blood is coming out of the blood vessels continuously, so that forms a clot around the structures. So two problems are there. Number one is hypoxia, and second is clot. So both these two can cause damage to the neural tissues. Because of destruction of the neural tissues, there may be loss of control over the movements, or the balance, coordination, posture, and sometimes if the bleed is severe, that can cause loss of vision, hearing, all this. Second type of bleed, which is not very much common, is the intramuscular bleed. In this, there is bleed in the muscles. This bleed occurs in response of abrupt contraction or strong contraction of the muscle or group of muscles. So because of this abrupt contraction of the muscles, normally minor bleeding occurs, and that is stopped immediately after that. But in patients with hemophilia, that does not stop. So blood comes out of the vessels and muscle fibers, and this continuous bleed leads to formation of a clot. That clot places stress on the neural structures and the vascular structures and on the muscle fibers. So all this leads to pain. There is discomfort. So patients avoid the movement because of pain. And if the movements are avoided for a prolonged period of time, that leads to shortening of the muscle. And when these muscles are stressed to improve the range of motion after 10 days or 15 days of the trauma, that also leads to some kind of bleeding. So stretching is also sometimes causing some kind of bleed. So a shortening of the muscles that leads to contraction of the muscles, and finally disability happens. The third type of bleed, which is very common and one of the major complications in persons with hemophilia. Intramuscular bleed is also known as hemarthrosis, and hemarthrosis is one of the challenges in children. Before that, we have to understand what is actually the normal joint. If you see the left side of this picture, there are two articular surfaces, and both of these articular surfaces are enclosed by a synovium. The prime function of synovium is to secrete synovial fluid into the joint cavity that lubricates the articular surfaces. The second function of synovium is to clear or remove the blood remnants such as erythrocyte secreted iron. So there are two major functions. Number one, it secretes synovial fluid that helps in lubricating the articular surface. Then second is clearance of the blood remnants from the joint cavity. Unfortunately, in hemophilia, the, there is
rupture of the synovium, usually at the age of around 20 months when a child starts walking and puts weight on the joints. So around 20 months, because load comes on the articular surfaces and it is transferred to the synovium also, because synovium uh, that encloses articular surfaces and the space between the articular surfaces is maintained because of the synovial fluid. So the load also comes on the synovium. So unfortunately, there is rupture of the tiny blood vessels of the synovium. Because of rupture of these blood vessels, blood comes out of the synovium and that enters into the joint cavity. So that leads to formation of a clot. There is formation or there is accumulation of the blood in the intra-articular surfaces that is known as hemarthrosis. This hemarthrosis can be seen like this uh, swelling. So usually around 20 months, if there is swelling in the joint, especially in the weight bearing joints, without any history of injury or trauma, it can be considered a hemarthrosis. And it should be taken into account that it's the first episode of hemarthrosis. Generally, after first episode of hemarthrosis, the symptoms are transient. It means almost all the symptoms disappear. Swelling will reduce, pain will reduce, joint will become normal. But unfortunately, due to repeated injury or repeated episodes of hemarthrosis, the blood in the intraarticular surfaces increases. There is more accumulation of the blood in the intraarticular surfaces. And that blood puts stress on the peripheral structures like capsule and the surrounding ligaments and tendons, and joint becomes swollen. We can see the swelling. It's like balloon. Now, because articular surfaces should be there in the synovial fluid, and synovial fluid lubricates the articular surfaces. That's also that also provides some nutrients to the articular surfaces. But now there is no synovial fluid. The articular surfaces are there in the blood. So prolonged blood or accumulation of this blood in the intraarticular surfaces leads to destruction of the intraarticular surface, intraarticular or the cartilages. So there is destruction of the cartilage or cartilage destruction begins. Normally, if we see, so it is not a kind of primary osteoarthritis, it's a secondary osteoarthritis. Primary osteoarthritis usually occurs after fifth decade of life or after 50 years, but secondary osteoarthritis begins 10 years before the primary osteoarthritis. So generally in the 40s we can see secondary osteoarthritis, but in person with hemophilia, secondary osteoarthritis can be seen in 20s also because in very early age or in less than 2 years of age, the children face repeated episodes of hemarthrosis and accumulation of blood or blood remains in the intraarticular surfaces. So that causes
destruction of the articular surfaces. So as the age progresses, usually after second decade of life or third decade of life, there is a formation of subchondral bone or subchondral cyst. Subchondral cyst is formed when there is exposure of the articular cartilage because the first part uh, which faces the joint is the articular cartilage, but because destruction of the articular cartilage, so articular cartilage is destructed. So there is exposure of the next part, that is the subchondral bone. And if there is destruction of subchondral bone, that leads to exposure of the cancellous bone. So as the disease progresses and because of destruction of the articular surfaces or the cartilage, there is a formation of subchondral cysts, subchondral sclerosis, osteophyte formation, epiphyseal enlargement, and osteoporosis. Now, in these cases, osteophytes are formed in the unshared areas or areas where weight is not transferred. So, osteophytes can be seen in the peripheral parts where the cartilage is intact or healthy. Sometimes these osteophytes are also known as stabilizing osteophytes because when the uh, joint stability is compromised, these osteophytes help in stabilizing the knee joint. The next, because of so all this lead to pain and swelling, stiffness. Uh, Patient avoids pain, and if patient avoids pain for a prolonged period of time, that leads to shortening of the muscles, contracture of the muscles, that forms the deformity, that results in deformity, and deformity causes disability. So patient faces difficulty in uh, walking or even if the disability is in more than one or two, three joints, that leads to difficulty in activities of daily living. So hemarthrosis is the major complication in severe hemophilia, and because of repeated episodes of hemarthrosis, the clinical manifestations will be like the swelling, stiffness, pain in the joint. Pain will be there during the movements and at rest also. Then joint distension, acute synovitis, and entalgic flexion position. So we can see hip and knee in the flexion position when the patient stands or walks. The synovium becomes thickened and starts secreting subabnormal hormones or enzymes that are actually pro-inflammatory that further aggravates the disease. And again, hemarthrosis and then clinical manifestations and gradually synovium becomes thickened. So this vicious circle continues. This is a knee joint. After repeated hemarthrosis, the joint is swollen. We can see the proximal knee joint or the distal thigh. There is atrophy of the muscles. We can also see the leg here. There are atrophy of the muscles, and the knee joint is not in extension. It is not extended. It is in the flexion position. This is because the hamstring muscles are shortened, and in some cases they become contracted or contracture. This contracture leads to deformity in the knee joint. So patient when they stand, they walk with the knee flexion gait. This is elbow joint because of intramuscular bleed. The flexors of elbow become shortened. They keep the elbow in a flexion position. When the patient tries to extend the knee joint, that causes pain. So
Holding the elbow joint in flexion position for prolonged period of time that can cause contraction of the elbow plexus. We can also see swelling in the ankle joint. This is flexion attitude in hemophilia patients. Because of hemarthrosis, there is swelling in the joint. The pain is experienced in the hip flexors. So patient keeps the hip flexors or keeps the hip joint in flexion position, and in knee joint also because of hemarthrosis, pain is experienced, and to relieve the pain, patient keeps the knee joint in the flex position. So this, if the problem prolongs, then this results in flexion attitude, and when the weight is transferred on the leg, patient keeps the ankle joint in plantar flexion. Now, hemophilia management. So, if we talk about the management, the first part of the management is the education. We educate the patient about the disease, what kind of disease it is. We all know that it is because of absence of factor 8 or factor 9 in the blood. So, because of absence, if there is injury or trauma, that can cause continuous bleeding. So, we teach the patient about the disease. We tell the preventive measures that can prevent hemarthrosis, and even if there is hemarthrosis, what are the precautions and what are the first aid, what are the treatments available to prevent further complications. The second part is prophylaxis. Prophylaxis is basically a long-term treatment that involves regularly administering floating factor concentrate to prevent bleeding, especially in the joints. The World Health Organization recommends prophylaxis as the first choice of treatment for severe hemophilia. The second is episodic therapy, and it is recommended or given when there is need. So, episodic therapy, regardless of the doses used, while essential in reducing the pain and debilitating impact of individual bleeds, does not alter the bleeding profile significantly and hence does not change the natural history of hemophilia, leading to musculoskeletal damage and other complications due to bleeding. The Medical and Scientific Advisory Council recommends physical therapy management for hemophilia because of the high frequency of joint and muscle bleed. In addition to that, physiotherapy, the assistive devices such as splints and orthoses also help in unloading the joint during acute and subacute phases. In the acute phase is when there is uh, hemarthrosis or episode of hemarthrosis. So because of that, there is swelling in the joint, pain is experienced, and patient finds difficulty in performing the movements. Even weight bearing is not possible. That aggravates the symptoms. So all these are the manifestations of acute phase. So if there is acute phase, in acute phase, we should not allow the patient to bear weight, or weight bearing is strictly avoided, because if weight bearing is allowed, that can aggravate the symptoms. So no weight bearing, complete bed rest. And to prevent bleeding, we recommend ice, because application of ice for 10 to 12 minutes can cause vasoconstriction of the vessels. So bleed from the microvascular vessels can be stopped. The second, to avoid movements in the joint, we can
recommend splints orthosis, and to reduce the pain, we can advise TENS. TENS helps in reducing the pain. In the subacute phase, when symptoms are not very severe, movements are possible. Patient can put little weight on the extremities. So if these symptoms are there, then we can say it's a subacute stage. And in the subacute stage, we can allow the patient to walk with minimal weight, 10 to 15% of the body weight, with the walker or crutches. The next stage is the chronic stage, where pain and swelling almost subsides. There is no pain in the movements. Patient can put the weight on the extremities and that load doesn't aggravate the symptoms. If these are the findings, then we can recommend exercises. And exercises are progressed from open kinetic chain exercises to isometric, closed kinetic, stretching exercises, and conditioning exercises. Open kinetic exercises are basically when both the distal ends of extremities are not in contact with the ground or the any other parts. They are free to move. So these exercises are basically advocated because they do not put extra load on the joint or the ground reaction forces on the articular surfaces are negligible. This is heel slide range of motion exercise. We tell the patient to move the hip and knee joint or flex the hip and knee joint while sliding the heel on the couch. In a high sitting position, we can tell the patient to flex and extend the knee joint. There are the quadriceps in which we instruct the patient to flex the tall roll under the knee joint and then tell the patient to raise the heel above the splint. There are the hamstring sets. In this, we instruct the patient to flex the knee around 90 degrees and dorsiflex the ankle joint. Then heel is pressed and pulled towards the knee joint. This causes contraction of the hamstrings. Then we can move to the strengthening exercises, straight leg raise, the prone leg raise, side leg raise, and the mini squat. Mini squat is recommended when there is no pain in the movements and patient feels comfortable in putting the weight. With the support of chair, both the knees are flexed up to 45 degrees. This puts a little bit ground reaction forces, but single loading is not allowed. Both the knees are allowed, so weight ground reaction forces can be minimized. The most common problem in knee joint is the flexion contraction. First there will be shortening of the hamstring muscle followed by contractures and the deformity. If the muscles are shortened, we can stretch them, and the stretching should be in the pain-free range. So, in simple way, we just tell the patient to place the towel under the heel and then gently press the knee joint down. That will stretch the hamstrings and the posterior joint capsule. This can be done in sitting on a chair and placing the ankle joint on another chair. The gravity will pull the knee down. Similarly, in prone position, both legs are out of the couch. The legs, the gravity acts and pulls the legs down. That will stretch the joint capsule. This is Thomas stretch. If left side iliopsoas muscles are short, then we place the patient in supine position with both the legs out of the couch. The opposite hip and knee is flexed. The knee is traced to the chest. This stretches the left side because in this picture, right hip and knee joint are flexed. So this is basically for stretching of the iliopsoas of the left hip joint. So exercises are basically to maintain the range of motion, maintain the muscle strength, improve activities of daily living, and improve quality of life. These exercises or stretching of the muscles and joint capsules should be avoided, especially in the acute and subacute phase. And passive stretching of elbow flexors
can cause myositis or significance. So that should be avoided. Instead of that, we can recommend some PNF techniques or isometric exercises or hold relax or contract relax. These will not produce a bleed and help in relaxation of the muscles. Walk is the safe modality. When patients uh, recover from the acute and subacute phase and they don't feel pain in walking, walk should be allowed. No jumping. Jumping can put extra load on the joints. So no jumping is allowed. Running is also not allowed, and no half and full squat without support. So all these precautions should be taken, and if these are taken, we can prevent the joint destruction, which usually happen in hemophilia. In the end, we would like to conclude this session by a vote of thanks by Mrs. Rajni Kalra, Assistant Professor, Physiotherapy. Good afternoon, everyone. It is always a pleasure to be a part of such academic and awareness sessions, and more so to be given the privilege to present the vote of thanks. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude towards our director sir, our deputy director sir, and my respected HOD, Mrs. Manda Chauhan ma'am, for providing all the possible support for organizing this session. On behalf of the physiotherapy department, I would further like to thank Dr. Vijay, consultant physician PDUNIPPD, and Dr. Roshan Lal Meena, lecturer PT. Thank you so much for presenting such an informative session on not so well known subject of hemophilia in such simple words. Further, my most sincere thanks also go towards my colleagues in my department and our technical support team who handled the event throughout successfully. Last but not the least, I would like to thank all the participants for taking out the time to be with us today and being a patient audience. A wide round of applause goes to all of you present here. Thank you.